गुड मॉर्निंग क्लास 11th। क्लास 11th आपका न्यू सेशन has started and a new chapter of life of yours have started. So I am here to give you just a brief idea of your first chapter physics में units and measurements. Units and measurement is the first chapter that will be tackling of your in your syllabus in physics. It's a you can say it's a short revision of whatever you have studied in class 9. जो भी 9th में पढ़ा है आपने ना उसका भैया ये शॉर्ट रिविजन है। और अगर 9th नहीं याद है तो ये नया है आपके लिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज मेजरमेंट? बिफोर आई टेल यू व्हाट इज मेजरमेंट, आई टेल यू कि अगर मेजरमेंट करना है तो कुछ तो चाहिए होगा ना। किसको मेजर करोगे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। जिसको मेजर करोगे वो है फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर करोगे वो है फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स व्हेन आई से फिजिकल क्वांटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग that requires measurement. So what is a physical quantity? किसी ने कहा तो it is anything. I suppose this is going to be lighter ना, so थोड़ा dark use करते हैं. So physical quantity is going to be anything जिसका measurement हमें करना हो, ठीक है। So anything that requires measurement or that is required to be measured, right? क्या क्या मेजर कर सकते हैं जो मन में आए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा वी वांट टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, सो हाइट बिकम्स द फिजिकल क्वांटिटी। फिर आपने कहा कि वी वांट टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो स्पीड बिकम्स द फिजिकल क्वांटिटी, राइट। से आपने कहा वी वांट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर acting on each one of us or on any object, so pressure, physical quantity. तो कितने भी हो सकते हैं ना, एक्सेट्रा, दे कैन बी सो मैनी। मीन्स जिसको भी मेजर करना है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर कैसे करोगे? कुछ तो चाहिए, कोई स्टैंडर्ड चाहिए ना। किसी के साथ कंपैरिजन करना मेजरमेंट है, तो कंपैरिजन के लिए कोई चाहिए। सी एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट व्हाट वी आर डूइंग इज we are comparing a physical quantity with a known standard, with a set standard. The unit actually जो होता है that is that can be also called as the standard of measurement. Standard of measurement. Physical quantity क्या होता है? जिसको measure करना है। और unit क्या होता है? Standard of measurement होता है। Standard of measurement for a particular quantity कह लो, for a particular quantity, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड तो चाहिए। स्टैंडर्ड थोड़ा एक दूसरे एग्जांपल से लेते हैं, ठीक है, उससे मेजरमेंट भी क्लियर होगा और स्टैंडर्ड भी क्लियर होगा। सपोज आई से दैट एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, एंड इसमें देयर आर नंबर ऑफ फ्लोर्स, 1 2 3 4 जितने बना लो एंड सो ऑन। नाउ समबडी सेज कि वी वांट टू मेजर द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। क्या मेजर करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेजर करना है। वी रिक्वायर टू मेजर द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। हमारे पास मेजरमेंट का कोई डिवाइस नहीं है। से थोड़ी देर के लिए लेट अस अज्यूम दैट वी डोंट हैव एनी मेजरमेंट डिवाइस। तो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने देखा इसके पास देयर इज अ ट्री, यू नो, बचपन में बनाते थे ना, ऐसे 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 करके। सो ऐसा कुछ ट्री है। तो लेट अस टेक कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि लेंथ ऑफ द ट्री इज अवर स्टैंडर्ड। से हमने कहा लेंथ ऑफ द ट्री जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है उसको स्केल पे हमने डेजिग्नेट किया 1। तो ऑन स्केल लेट द हाइट ऑफ दिस ट्री बी 1। सो वी आर टेकिंग हाइट ऑफ दिस ट्री एज अ रेफरेंस वैल्यू से 1 ऑन स्केल। तो अगर हाइट ऑफ ट्री इज 1, यू कैन सी ये जो बिल्डिंग है उससे थोड़ा सा ऊंचा है। दैट इज क्या होगा? लेस देन 1, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1। अगर मैंने पूछा कंपेयर टू द हाइट ऑफ द ट्री जिसको हमने लिया है 1, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। दिमाग में आ रहा होगा आपके, इट विल बी ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग से h
will be found to be greater than 1. सपोज कर लेते हैं कि इट इज समवेयर अराउंड, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमने किया तो वी फाउंड इट एज कि इट इज 1.15 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड. So we'll write it as कि h equals to, that is height of building is 1.15 times of our standard, that is height of tree. बच्चों यहाँ पे देखो height of tree क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड है तो इसको बोलेंगे यूनिट, इसको बोलेंगे यूनिट. ठीक है ना. जो हाइट ऑफ ट्री है वो क्या है ना, वो थोड़ा नीचे हो गया, ऊपर लिख देते हैं. तो हाइट क्या है 1.15 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ ट्री. तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड हो गया. विल कॉल इट एज यूनिट. स्टैंडर्ड को बोलेंगे यूनिट. What has been measured here? We have measured the height of the building, that is h. So h becomes the physical quantity or height becomes the physical quantity. And what we are doing, we are comparing the two, that is the physical quantity and the unit, to get the magnitude, to get the magnitude. So this number is referred to as the magnitude of the physical quantity. Number को क्या बोलते हैं, magnitude of the physical quantity बोलते हैं. And this word times tells us that we are comparing the physical quantity with a given standard, that is a unit, है ना. तो जिसको मेजर किया जाए वो फिजिकल क्वांटिटी, जिस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाए वो क्या होगा, यूनिट होगा. तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और अ पर्टिकुलर क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट. देन व्हेन वी कंपेयर, कोई नंबर मिलेगा ना, उस नंबर को बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, उसको बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. एंड व्हाट इज मेजरमेंट देन, मेजरमेंट हो गया हमारा. इसको अगर इलैबोरेट करें तो वी कैन से दैट मेजरमेंट इज एक्चुअली द कंपैरिजन बिटवीन, it is the comparison between a physical quantity and its standard, that is unit. And when we compare these two, that is unit and a physical quantity, we obtain a number, and that particular number of the numerical value उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे magnitude. So what is the magnitude? The number obtained after comparison, or the numerical value obtained after comparison between physical quantity and unit. तो जब आप कहते हो your height is 5 feet 6 inches, that is 66 inches, so you are saying that your height is actually 66 times of 1 inch. So 1 inch becomes the standard unit. This number 66 is the magnitude, and what you are measuring is your height. So height is the physical quantity, right? So I hope I have made this one clear. Now the question is कि how many physical quantities are there, how many units are there, उनके standards कितने हैं. तो इससे पहले कि हम सारे एक साथ बताएं, physical quantities, the list is very very large. So to make them bit convenient, we have done, what we have done is we have classified the physical quantities into two categories. और अगर quantity classify होगा तो भाई साहब unit भी classify होगा ना, नहीं. देखिए, so in the next table or in the next chart we are classifying a physical quantity in two categories. Every physical quantity can be put either in one category or the second, and the categories are, the quantities may be basic or fundamental, and the second set can be derived. Basic और fundamental का मतलब those which are independent, and derived are actually dependent. तो derived कौन है, derived वो है जो dependent है. We can call them as derived, means these are dependent quantities. And what are basic or fundamental? These are independent, right? So those quantities which are independently described, they are referred to as basic or fundamental. कौन कौन है, 7 है, याद होना चाहिए. They are respectively length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, and amount of substance, right? So 7.
हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ठीक. Class 11th, along with these 7, there are 2 supplementary quantities which are added to this list, and those 2 supplementary quantities are actually angle and solid angle, right? So overall, basic and fundamental, the list is limited. We have 7, along with supplementary quantities 2. But derived, the list is very large. I'll write here few of them, giving an example how they are dependent. For example, if I talk about speed, so speed means distance upon time, na? Distance refers to length between two positions of the object. Distance refers to length between two positions of an object. So distance is actually length divided by time. So here you can see with this example, speed is dependent upon two basic quantities, length and time. That is why we call speed as derived. और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं. जैसे मैंने कहा, we can talk about velocity, तो vector हो जाएगा, nearly the same. Then acceleration, force के साथ ही आता है moment of force ना. There are so many, pressure, momentum, etc. So all these quantities will be referred to as the derived physical quantities. Why they are derived? Because in some manner or the other they are dependent upon the basic physical quantities, right? Ab, if you are defining units or their measurement standards, so any measurement standard or corresponding to, or any unit corresponding to the basic or fundamental will be referred to as basic unit. तो सिंपल लैंग्वेज में कहें, बेसिक क्वांटिटीज का जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है उसे बोलेंगे बेसिक यूनिट, और डिराइव्ड वाले को बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स. ठीक है, उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स. ठीक, तो यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं अगले डिस्कशन में. ये तो क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन था. लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स फॉर द बेसिक फर्स्ट एंड देन फॉर फ्यू ऑफ द डिराइव्ड, बिकॉज द लिस्ट इज वेरी लार्ज फॉर डिराइव्ड. तो बात करते हैं बेसिक यूनिट्स की, उनके सिंबल्स की. बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द सिंबल ऑफ द यूनिट्स. ठीक है, so talking about a basic quantity, its standard, that is the unit, and then talking about its symbol. So how many quantities I told you? I told you length 7 na, mass, time, electric current, temperature, और क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, so these are 7. Their units: for length, you know, it is meter; for mass, kilogram; for time, second; electric current, ampere; temperature, केल्विन; ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला से मेजर करते हैं इसको. मेजरमेंट इज डन बाय द स्टैंडर्ड कैंडेला, यूनिट्स कैंडेला. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आई होप यू नो, मोल. ठीक है, नाउ दे आर रिस्पेक्टिव सिंबल्स. फॉर मीटर इट इज स्मॉल m, किलोग्राम kg, सेकेंड स्मॉल s, एम्पियर कैपिटल A, केल्विन कैपिटल K, कैंडेला CD, mole MOL, all three small, right? So these are the respective symbols. Now I had defined two more supplementary quantities and they were respectively angle and solid angle. तो उसको भी यहीं पढ़ लेते हैं, angle and solid angle. If I'm talking about angle, you know, I'll be measuring it in radians.
I'll be measuring it in radians. Solid angle will be measuring it in steradians. So when you talk about radians, the symbol is RAD. Talking about steradians, ST.RAD. That is the symbol. So this is how the basic quantities are defined, their standards are given or chosen with their respective symbols. Now each and every standard here, meter, has been defined in particular magnitude. Kilogram, 1 kg has a particular magnitude. 1 second has a particular magnitude. So each and every standard here has been defined. For example, if I'm talking about, say, meter, meter will be defined in terms of the speed of light, that is distance traveled by speed of light in a particular value of time. Similarly, kilogram has been defined by the mass kept under controlled conditions. Second has been defined as the transition between hyperfine levels of cesium-133 atom. So each and every of the standard, the magnitude has been clearly defined, clearly as well as precisely defined, right? So in this video, we have taken up with the measurement. We have taken up, क्या क्या सीखा? We have taken up with the types of physical quantities. सीखा physical quantity क्या है, उसका unit क्या है, मतलब standard क्या होता है और measurement क्या होता है. Then we talked about the classification of the quantities into two, that is basic and derived. Here we have done with the basic quantities, their standards and symbols. Next video we'll be talking about the derived physical quantities, derived units, their respective symbols. We'll be talking about the systems of units, and we'll be talking about the manner in which each and every one of them has been defined. Few of them will be talking about how they have been defined and what is meant, या how their magnitude has been measured. मतलब 1 meter है तो 1 meter कैसे measure किया है. So this will be talking about in next video. By then इसको देख लीजिए. If you are new to the channel, do like, subscribe and share it with your friends so that even they are benefited. By then, thank you.